Create a video using exactly this script. Car engine repair full video in Urdu. For repairing a car engine, you will need several essential tools. These include wrenches, screwdrivers, pliers, and a socket set. Additionally, having a torque wrench and a multimeter can be incredibly helpful. Make sure all your tools are in good condition and easily accessible. Safety is paramount when working on car engines. Always wear safety goggles and gloves to protect yourself. Ensure the car is on a stable, flat surface, and use jack stands if you need to lift the vehicle. Disconnect the battery to prevent any electrical hazards. Remember, a safe workspace is a productive workspace. Diagnosing engine problems can seem daunting, but it's all about observation and systematic checks. Listen for unusual noises, check for leaks, and monitor the engine's performance. Use a diagnostic tool to read any error codes from the car's computer. This will give you a clearer idea of what might be wrong and guide you on the next steps. Now, let's begin by disassembling the engine. First, we need to remove the valve cover. Make sure you have all your tools ready. Carefully unscrew the bolts and set them aside. Once the valve cover is off, we can see the rocker arms and push rods. Next, we will remove the rocker arms. Be gentle to avoid any damage. After that, take out the push rods and keep them in order. This will help during reassembly. Finally, we will remove the cylinder head. This requires some patience, so take your time and do it carefully. With the engine disassembled, we can now move on to cleaning the components. Start with the valve cover. Use a degreaser and a brush to clean off any oil and grime. Make sure it's thoroughly cleaned. Next, clean the rocker arms and push rods. These parts need to be spotless to ensure proper function. After that, clean the cylinder head. Pay special attention to the combustion chambers and valves. Finally, clean the engine block. Remove any debris and make sure all surfaces are clean and smooth. This step is crucial for the engine to run efficiently. Acha, अब हम engine की parts को inspect करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें replace करेंगे. सबसे पहले, हम piston और cylinder को check करेंगे. अगर इनमें कोई damage या wear and tear नजर आए, तो इन्हें तुरंत replace करना चाहिए. फिर हम crankshaft और camshaft को inspect करेंगे. अगर ये parts भी worn out हैं, तो इन्हें भी नया लगाना ज़रूरी है. Engine की seals और gaskets को भी check करना न भूलें, क्योंकि ये parts oil leaks को रोकने में मददगार होती हैं. अच्छा, अब हम engine को दोबारा assemble करेंगे. पहले, हम crankshaft को वापस engine block में fit करेंगे. फिर, pistons और connecting rods को ठीक तरीके से install करेंगे. Camshaft को भी अपनी जगह पर fit करेंगे और timing belt को सही तरह से align करेंगे. सब कुछ ठीक से fit करने के बाद, हम engine के head को वापस लगाएंगे और bolts को tightly screw करेंगे. सब कुछ ठीक से tighten करना जरूरी है ताकि engine smoothly चले. अब वक्त है engine को test करने का. सबसे पहले, हम engine oil और coolant को refill करेंगे. फिर, battery को reconnect करेंगे और ignition start करेंगे. Engine को कुछ देर idle पर चलने देंगे और किसी भी unusual noise को check करेंगे. अगर सब कुछ ठीक है, तो हम engine को थोड़ा rev करेंगे और ensure करेंगे कि वो smoothly और efficiently चल रहा है. तो दोस्तों, ये था engine repair का complete process. अब कुछ maintenance tips के लिए. हमेशा अपनी engine oil को वक्त पर change करें और coolant levels को check करें. Air filter और fuel filter को भी regular intervals पर replace करना न भूलें. और सबसे ज़रूरी बात, engine को overheat होने से बचाएं और इसकी regular servicing करवाते रहें. इस तरह से आप अपने engine की life को extend कर सकते हैं और उसकी performance को बेहतर बना सकते हैं.